So in this video, I will tell you each and every single thing about ground staff, like eligibility criteria, duties and responsibility, top recruiting companies, salary, book and material, pros of becoming a ground staff, top colleges. I will cover all these things in this video. If that sounds interesting, let's begin this video. तो स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। Let's talk about the first point. What is ground staff? Ground staff होता क्या है? So ground staff is responsible for attending to the passenger before, after and in between the flight. They are also responsible for solving the queries of the passenger, providing flight information and ensuring that they will not face any difficulty during the flight. Ground staff is a major part of aviation industry and they cannot be replaced by computer or machines. Some of the major responsibility performed by ground staff are checking passenger for the flight, assisting the passenger who are with children and disabled passengers, handling the unloading and loading of passenger luggage from the aircraft, carrying security check activity as a regular interval, updating passenger with timing and change in flight schedule, preparing the flight plan according to the weather condition and climate of the destination and origin, rebooking the passenger whose flight have been delayed. This position is very challenging and require good managerial skill to manage all the customers. Candidate who are looking for a career as a ground staff, आपका जो नेचर है वो बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए एंड आप बिल्कुल काम नेचर के होने चाहिए। आपके अंदर ये दो चीजें नहीं है तो आप ये जॉब नहीं कर पाओगे। आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल खड़ूसों वाला या फिर गुस्से वाला नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल फ्रेंडली नेचर के होने चाहिए और काम नेचर होना चाहिए आपका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ ग्राउंड स्टाफ। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई दीज बेसिक रिक्वायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट, डज हाइट मैटर? नो, हाइट डजंट मैटर। आप बिना किसी हाइट रिक्वायरमेंट के ग्राउंड स्टाफ बन सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एयरलाइंस में उनको कुछ स्पेसिफिक हाइट रिक्वायरमेंट होती है, लाइक मेल के लिए 170 सेंटीमीटर एंड गर्ल्स के लिए 155 सेंटीमीटर। ये सिर्फ कुछ एयरलाइंस में होता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर अ करियर एज अ ग्राउंड स्टाफ, यू मस्ट हैव क्लियर्ड योर 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर दिस पोजीशन विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। देयर इज नो एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ ग्राउंड स्टाफ। कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर अ सक्सेसफुल करियर इन ग्राउंड स्टाफ, यू कैन ऑल्सो डू दीज थिंग्स बट इट्स नॉट कंपल्सरी। आपको जरूरत नहीं है बट आप कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस, सिंस मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, इट इज एडवाइजेबल दैट you should gain some experience before applying for senior level position in ground staff. You can complete any training program in ground staff or any other aviation related course to gain some experience. Candidates should have some experience in customer service while looking for a career in ground staff. There are so many skills which can help the candidate to have a successful career in ground staff, and those skills are communication skills, planning, organizing, responsibility, teamwork, problem solving skills, interpersonal ability, flexibility, soft skills, management skills, professional technical technique. You should know about all these things. Now let's talk about the third point, types of job roles of ground staff. A variety of job roles are available for the ground staff. तो जो एयरलाइन है बहुत सारे अलग अलग कामों को हैंडल करने के लिए कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, लाइक फ्लाइट मेंटेनेंस टू सॉल्विंग द क्वारीज ऑफ पैसेंजर। कैंडिडेट कैन चूज एनी जॉब रोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट। सो दीज आर सम जॉब रोल्स: एयरलाइन ऑपरेशन एजेंट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, एयरलाइंस टिकट एजेंट, क्रू शेड्यूल कोऑर्डिनेटर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, reservation sales agent, ramp planner, passenger service agent, flight dispatcher. If you want video about any job role which I just mentioned, just do let me know in the comment section. I will make a separate video on it. Employment opportunity for ground staff. If you are looking for a career as a ground staff, then you can apply for this job at any airline after completing your education. Airlines are always looking for professional in this field. तो आप simply आप उनकी job description में जाकर check कर सकते हैं specific airline के बारे में कि उनको क्या eligibility criteria चाहिए इस job के लिए। Some employment opportunity available for ground staff are airlines, airports, travel agency, aviation firm, tour agencies. Now let's talk about the fourth point. Top recruiting agency for ground staff are Air India, Vistara, SpiceJet, Lufthansa, Indigo, Virgin Atlantic, Jet Airways, Emirates Airlines, Qatar Airways, AirAsia, India, Go Air. If you want video on any agency, just do let me know in the comment section just below the like button. I will make a separate video on it. Now let's talk about the fifth point. Salary of ground staff. An average salary for ground staff in INR is 21,000 for a fresher. And जो मैंने आपको अभी एवरेज सैलरी बताई है वो एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करती है एंड वो वेरी करती है अलग अलग एयरलाइन के लिए। एंड ऑल्सो आपका जॉब प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है इसके अंदर। आपको अपनी जॉब प्रोफाइल एनहेंस करने के लिए एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा एंड जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस गेन करते रहोगे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ पॉइंट, बुक्स एंड स्टडी मटेरियल टू बिकम अ ग्राउंड स्टाफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है
एंड मैं सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ग्राउंड स्टाफ के अंदर इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आपकी जो कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज में वो अच्छी होनी चाहिए। तो बुक्स बताने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पैसेंजर्स मिलेंगे आपको। वहाँ पर गुस्सा भी करेंगे आपसे, वो आपको इरिटेट भी कर देंगे, लेकिन आपको हैंडल करना आना चाहिए उनको बिल्कुल एमिकेबल मैनर में। तो आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस जॉब के अंदर। तो हाँ, मुझे यही बात बतानी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बुक्स। देयर आर मैनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट विच कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर अ सक्सेसफुल करियर इन ग्राउंड स्टाफ। आई विल टेल यू सम बुक्स। सो द फर्स्ट बुक इज एयरलाइन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट बाय ग्रेराल्ड एंड कुक एंड ब्रूस बिलिंग। आई एम सो सॉरी अगर मैंने उनका नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो। सो द सेकंड बुक इज स्काई गॉड द फॉल ऑफ पेन एएम बाय रॉबर्ट गैंथ। आई एम सो सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो। सो द थर्ड बुक इज ब्लू स्ट्रीक बाय बर्बरा पीटरसन। सो द फोर्थ बुक इज हार्ड लैंडिंग बाय थॉमस Petzinger Jr. Fifth book is Airline Operation, a practical guide by Peter J. Bruce. And the last but not the least, Air Career Operation by Mark J. Holt. So those are my recommendation for you guys. Now let's talk about the 8th point. Pros of becoming a ground staff. So the first point is career in ground staff is very challenging but also highly rewarding. I will not say कि cabin crew जितना आपको salary packages के अंदर मिलेगा, but still आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। You will have to work in rotational hours. Sometimes you might be asked to come in morning shift, while sometimes at night shift. You will have to handle the queries of passenger in case of emergency such as climate change. As a ground staff आपको अपने पैसेंजर से politely बात करनी पड़ेगी। इवन इफ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो उस टाइम में, आपको स्टिल आपको उनसे पोलाइटली बात करनी पड़ेगी। आई विल नॉट से कि ये प्रोज है, बट स्टिल आई वांट टू ऐड इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट। इट इज नॉट कंपल्सरी बट स्टिल आई जस्ट वांट टू अवेयर यू गाइस। आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टॉप कॉलेजेस टू परस्यू करियर एज अ ग्राउंड स्टाफ। फर्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। सेकंड, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। थर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। फोर्थ, एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा। फिफ्थ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी केजीपी। सिक्स्थ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। सो दीज आर सम टॉप कॉलेजेस एंड इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला होगा एंड जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जस्ट बिलो द लाइक बटन कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। सो हमारे चैनल बहुत ज्यादा करीब है 2000 सब्सक्राइबर के, सो लेट्स हिट दैट माइलस्टोन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and I will see you guys in the next one. Till then, bye bye.